अच्छा, वन मोर क्वेश्चन था ये, आई थिंक इंटीग्रेटेड काइंड ऑफ क्वेश्चन था, ऑफ था विद एनाटॉमी कह सकते हो एंड विद द मेडिसिन। ये एक क्लिनिकल सिनेरियो था जिसमें दे गेव यू द बेस ऑफ द स्कल, बेस ऑफ द स्कल था एंड दे गिव यू द मार्किंग ऑफ द नर्व्स। सो व्हाट इज द डायग्नोसिस हियर? फोटोफोबिया, लैक्रिमेशन था, फोटोफोबिया है, लैक्रिमेशन है, हेडेक है। So that means it is actually affecting the trigeminal nerve. Lacrimation and headache कहाँ से होगा? This is from the sensory supply. And you know that the sensory supply of the cornea is actually the trigeminal nerve. So the answer should be trigeminal nerve. They did not say lacrimation but they wrote tearing. एक ही बात है, lacrimation की जगह tearing लिख लेते हैं। फोटोफोबिया है, टीयरिंग है एंड हेडेक है। ऑप्शंस देखो नर्व्स का। आंसर ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चन इज पीआरपी। उसके अलावा ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा, ओके, ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा हो गया एंड उसके अलावा वी आर हैविंग द पेरिऑर्बिटल पेन, we are also having the periorbital pain. Yeah, I know they marked it on this but I could not get a similar picture. If you people can suggest me any similar image that came in the yesterday exam, please let me know. It was an image based question, I know, but the options which were marked, I have taken that. They had marked that, I know, but I could not get a similar image from the feedback. So I have actually taken the 4 options which you people told me were marked on that base of the skull. I think it was a cadaveric image. Base of the skull का worst picture था। हो सकता है because you know cadaveric images are actually hard to find and then they had to actually mark on the top of it. तो ऐसा हो सकता है, लेकिन स्क्लेरल बकलिंग कहाँ था? आई डू नॉट नो। एनी अदर क्वेश्चन दैट यू कैन एक्चुअली हेल्प मी इन गेटिंग? दीज वर द क्वेश्चंस दैट आई गॉट फ्रॉम योर रिकॉल. इफ यू नो एनी अदर क्वेश्चन दैट यू गॉट इन ऑफ्थेल्मोलॉजी, प्लीज लेट मी नो, वो भी डिस्कस कर लेंगे। कैडावरिक सेक्शन था। और कोई क्वेश्चन जो लगता हो ऑफ्था से आया था और अभी हम डिस्कस कर सकते हैं कैसा पेपर था? आई थिंक और आप लोगों की तैयारी जो थी ना, द काइंड ऑफ प्रिपरेशन यू पीपल वर हैविंग, यू कुड हैव डन इवन नेक्स्ट लेवल एंड नेक्स्ट लेवल पेपर. That is very good na, that you found the paper easy, you were having such a high level of preparation. But don't get disappointed. The questions that you get, you were able to do them and they were from your this notes only. So I think it's good, not a problem. Okay na, hamesha you do not get a kind of paper that you expect, but if you are getting the things from your syllabus and you are getting the things from your notes, I think it is good to go. Okay na, पेपर वॉज ईजी. तो एक्चुअली डिसअपॉइंटमेंट इसलिए हो रहा है, कभी कभी क्या होता है कि व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग दिस हाई एंड यू गेट दिस मच ना, यू गेट डिसअपॉइंटेड कि ये तो सब कर लेंगे. आई थिंक दैट हैपेंड. एंड केराटोकोनस रिंग सेगमेंट इमेज वाज आस्क्ड. ठीक है, तो ये हमने वेरी फर्स्ट क्वेश्चन किया था. एनवीडी वाले क्वेश्चन में अच्छा दे हैड गिवन यू द विजुअल एक्विटी ऑफ 6/9 था. फेशियल नर्व वाज वन ऑफ द ऑप्शन. तो एब्ड्यूसेंस नहीं था शायद, फेशियल नर्व था.
हाँ, actually I used to form very clinically integrated paper ताकि you get the best of the preparation, but never mind, उससे preparation तो हुआ ना, and the thing is that you found the actual paper very easy, so I think that is my success. Scleral buckling was the last option in which question? I could not get this. Diabetes is associated with the retinal detachment. लेप्रोसी वाला मुझे नहीं मालूम है कौन सा क्वेश्चन आया था. इफ यू लेट मी नो व्हाट वाज द क्वेश्चन, आई डिस्कस. वॉक्स ट्राइड पे नहीं था, आई थिंक इट वाज अ वॉक्स लिम्बल गर्डल. वॉक्स लिम्बल गर्डल पर था ये वाला क्वेश्चन आई थिंक, हेमंत. जो ये जो इंडेक्स था इसमें केराटोकोनस, केराटोग्लोबस एंड द वॉक्स लिम्बल गर्डल वाज आल्सो वन ऑफ द ऑप्शंस. And that will be giving you the trigeminal nerve. Anti-VEGF. अच्छा, diabetic retinopathy में the fourth. अच्छा, I think you are telling this. Anti-VEGF. Anti-VEGF was also the option, and that will be your Tay-Sachs disease. 140 to 145. Yes, it's a correct one. Right. So, scleral buckling भी था. I do not know anti-VEGF था या फिर scleral buckling था. You will have to confirm this. Okay, so I think this is your NEET Ophthalmology 2022, and soon I'll be coming with the ophthalmology revision strategy for 2023, because it's a high time now. Things are gone, and those of you who are preparing for 2023, one thing more I would like to say, please don't panic कि NEET होगा कि next होगा. That every day you people are furious about it. NEET होगा, next होगा, ऑफ्ता रहेगी. Number of questions increase हो जाते हैं, तो not a problem ना. We are preparing it at the best level. So that is not a problem, and I'll come with a revision strategy and the strategy for doing ophthalmology for NEET 2023 very soon. So stay calm, stay motivated. कुछ नहीं होगा. अगर हम लोग इस तरह से पढ़ते रहेंगे, then definitely you will get. Please include me in your feedback team. Yeah. Thank you so much, guys. Book is coming very soon. And I hope you have got the explanation of all the questions. And trigeminal nerve है, Tay-Sachs disease है. उनका आंसर ये हो गया. And for the NEET PG 2023, I'll be coming very, very soon. So take care. Goodbye and all the very best. Keep your fingers crossed. I know all of you will get your desired seat, desired college, whatever you want. Be positive, and definitely luck and your hard works will pay off. Thank you guys. Bye-bye.